Good morning. Good morning, Evan. How are you? Long time. Guys, give me 2 minutes, we'll start. I'm doing good, thank you, Evan. How are you? How is your trading going on?
So let's start with Nifty. What do we see in the Nifty? Nifty is at the all-time crash, which is from 4 months, right? So 4 महीने से क्या किया market continuously? If you notice, the market has closed in red on monthly candles. This is the fifth month running. So what is the main thing that you have to be focusing on? क्या एक चीज आपको फोकस करके चलनी होगी? Liquidity range of Feb month, right? So the liquidity range of Feb month को consideration पे लेके March financial year starting तक you can't be bearish on any of the markets in India. So what's the first thing that you have to be looking at the consideration? पहले liquidity ranges को identify कर लो monthly में, right? So how do you see it at? So the first liquidity point is the shadow candle, which you can see it over here, right? तो ये एक shadow candle है, right? उस shadow candle के बाद major regenerational of liquidity कहाँ पे है? यहाँ पे है, right? So 19,000 is the major range. So mark out 19,000 as one of the major ranges and allocate the levels, right? So these are the two major levels that you could be focusing on for this year if the market comes down in a crash range, right? इसके बाद अभी हमको what is the main allocation that we have to look at? Sir, Sensex 600 points गिरा था. Yes, वो कल था. Now let's come down to 1 hour. In 1 hour range, what is the major thing that you're noticing at? Where is the major liquidity? The major liquidity आपको कहाँ पे मिलेगी? यहाँ पे, right? Till then, you can't be looking towards in the trade towards the long, right? Short के लिए मिल रहा है, allocate कर लो. अगर long के लिए मिल रही है, wait, look at the small considerational points and allocate the trades. राइट? ग्रीड में आके फोमो में आके ट्रेड्स एग्जीक्यूट मत कीजिए. लेट द मार्केट कंसिडरेटली फॉल टू द लेवल्स वेयर द एग्जैक्ट लिक्विडिटीज आर. द मेजर लिक्विडिटी ऑफ 1 hour इज एट 22,700, राइट? ऊपर के लिए भी अगर कंसिडरेबल लेवल्स देखोगे दैट इज 23,800 के ऊपर सस्टेन होती है, तब तक हम लॉन्ग के तरफ स्विंग अलोकेशन नहीं देखेंगे. Okay. So till then, market will be at the selling side. We will be looking the trades towards selling side. So this is for Nifty. So now coming down to intraday, allocate the trade at 15 minutes. What is the one major thing that you will be looking at in 15 minutes? What is the trend? Keeping in mind, trend is in the positive circumstances of the fib level extensions, right? अगर draw out करोगे ये और ये आपको fib level में मिलेगी, which is 0.5 to 0.6, right? So अगर हम डाल के देखें तो कहाँ पे है मार्केट एग्जैक्टली करेंटली ट्रेंडिंग है? दिस लेवल इज एट 0.6, दिस इज एट 0.5, एंड वेयर इज मार्केट ट्रेंडिंग? मार्केट ट्रेंडिंग इज एट 0.5. हमें यहाँ पे क्या चीज को नोटिस करके चलना है? व्हाट इज द मेन थिंग दैट यू विल बी फोकसिंग ओवर हियर? द मेन थिंग यू विल बी फोकसिंग ओवर हियर इज following the price action as per the allocation of the trend cycle reversal. ट्रेंड साइकिल रिवर्सल मतलब जब भी एक डायरेक्शन में मार्केट फॉल होती है, राइट, with a consecutive price action, so it will come down till the major liquidity areas. बिकॉज ए लिक्विडिटी एंड ये लिक्विडिटी अभी तक मार्केट ने नहीं ली हुई है, राइट? सो हेंस द ट्रेंड इज स्टिल बेयरिश. प्लीज डोंट लुक टुवर्ड्स द ट्रेड टुवर्ड्स द लॉन्ग and follow the rules, look into the price actions and trade according to the liquidity zones, right?
Sir, what is our target? 23,194 is our target, which we'll be looking at. ये वाला, right? And now coming down to 5 minutes. What is 5 minutes saying? 5 minutes का opening candle कौन सा है? Let's go as per the normal sentimental analysis of the entire retailers market. This and this range, right? Took the rejection break. सब लोगों को इस pullback में बिठाया. Market went up, took the rejection from this point and following through. Right? Always remember जितना बड़ा movement allocations आपको दिखेगी starting 5 minutes में, उतना ही बड़ा movement opposite direction में मिलने को दिखेगी. Just for an example, if you see this line mark, what is this line mark? This line mark is according to the morning candle for till the retracement, right? अगर ये notice कर रहे हो, तो हमने क्या किया था? इस कैंडल को अलोकेशन के साथ इस प्राइस एक्शन होने के बाद रिट्रेसमेंट में डाला था. फ्रॉम दैट रेंज हमको यहां से अप्रोक्सीमेटली अराउंड 300 पॉइंट्स की शॉर्ट ट्रेड अलोकेशन दिख रही है, राइट? जब 300 पॉइंट्स की शॉर्ट ट्रेड अलोकेशन दिख रही है, मतलब नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ द लिक्विडिटी अलोकेशंस. तो उस डायरेक्शन को वो कंप्लीट करेगा. इसी पॉइंट से अगर रिवर्सल दिखना है तो इस पॉइंट से आपको दिखने को मिलेगी, उससे पहले नहीं. दिस इज फॉर निफ्टी. लेट्स कम डाउन टू बैंक निफ्टी नाउ. व्हाट इज बैंक निफ्टी डूइंग? Same. Let's start with 1 month. Consecutive third month in red, right? So where is the major liquidity of monthly? This is the first range and this is the second range, right? Follow only two major ranges. दो range के ऊपर follow मत करना and allocate उसके हिसाब से ही देख के चलना. Then coming down to daily, what is daily showing? Daily is showing a retracement towards long. Price actional break हुई है, change of character हुई है, change of character होने के बाद consecutive drop हो रही है, right? So यहाँ पे consecutive drop हो रही है. तो what is that one major thing हमें notice करके चलनी होगी? Where are the liquidities? To identify that liquidity, let's come down to 1 hour. At this range, यहाँ पे what is the price action that you guys will be following? क्या price action को follow करके चलोगे? Yes, that's right. So there is a liquidity grab for the people who are sitting on the top. If you notice, gap up open हुआ, market consecutively ran there. उसके बाद इसके ऊपर जो जो बैठे थे उनका लिक्विडिटी इधर से ग्रैब की एंड मार्केट कंसेक्यूटिवली ड्रॉप पे है, राइट? इस ड्रॉप को आइडेंटिफाई करने के लिए, राइट, व्हाट इज द मेजर लेवल ऑफ टारगेट दैट यू विल बी लुकिंग एट? 1 आवर के हिसाब से अगर हम ड्रॉ करते हैं, so this is our level of executional point, right? सेम कॉपी करके रिट्रेसमेंट के बाद अलोकेट करना. Where is the retracement line? This is the retracement line. What do you see? Our target is 49,135 because the retracement allocation of the liquidity majorly, where do you find it? The major liquidity allocational point is at 49,135 over here. Right? उस हिसाब से एक short trade till that level which is 49,254 हम देख रहे हैं आज के दिन में. Right? To get into this consideration, where are the major liquidities aligned? Let's come down to intraday levels of 15 minutes. Okay, major liquidity allocation अगर आप देख रहे हो, there is a gap allocated over here.
राइट। सो यहाँ पे एक गैप अलोकेशन है। इस गैप अलोकेशन का लेवल आके ये है, अगर ये ब्रेक करके सस्टेन करती है तो डायरेक्टली द टारगेट्स विल बी टिल 49,200, which is an allocation buyer's point at the current range is this level, right? ये पूरा मार्केट was into the fractional parallel channel, तो यहाँ पे जो लिक्विडिटीज है तो उस लिक्विडिटी को अलोकेट करने के लिए मार्केट ये ड्रॉप देगी। So this is in 15 minutes. Look for an allocation at 5-minute level. What could you be seeing on a daily candle row allocation? Daily candle row allocation के हिसाब से अगर हम आते हैं तो this is the moment before the retracement, correct? So this is the level what we drawn. सेम कॉपी करके इस तरफ ड्रॉ आउट कर लिया है बिकॉज दिस इज द रिट्रेसमेंट लेवल, रिट्रेसमेंट फॉल। सो वी वेट फॉर वन प्योर लिक्विडिटी अलोकेशन। उस प्योर लिक्विडिटी अलोकेशन के साथ हम फिर से ऐड ऑन करेंगे हमारा ट्रेड टुवर्ड्स द शॉर्ट। एनी डाउट्स प्लीज लेट अस नो। सो दिस इज फॉर इंडियन सेशंस, बैंक निफ्टी एंड निफ्टी। इसमें अभी तक अलोकेशन नहीं हुई है, राइट? इस पॉइंट ऑफ एक्शन से मिलती है तभी, उससे पहले नहीं। So these are the levels that we will be looking for an allocation in the Bank Nifty and Nifty range. Let's come down to BTC and gold. Start with daily. What do you see in a daily candle range? In a daily candle range, you can see a shadow candle creating at this area, right? अगर ये shadow creating कर रही है तो what is the major liquidity of allocations that we can be looking in today's point, right? First, today's point allocation is wick to wick, which is at the range of 2886. उसके बाद second wick allocation is at 2836. These are the two levels. If the short trade gets exaggerated as per the levels, ये हमारा टारगेट आज के लिए हो सकती है। But this is just a daily. This is looked at as a swing trades, but we are intraday traders. Let's come down to 4 hours. As per the 4 hours, what do you notice? As per the 4-hour range, we can look for an momental liquidity which is being allocated at the point range of 1, 2, 3. राइट? अगर इसी रेंज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में अगर लेवल अप आइडेंटिफिकेशन देखते हो तो लेवल अप आइडेंटिफिकेशन के हिसाब से अगर मैं लाइन अप ड्रॉ करूं यहाँ पे, राइट, दिस विल बी माय रेंज ऑफ टारगेट आफ्टर द रिट्रेसमेंट। सो लेट मी जस्ट कॉपी द सेम थिंग एंड रीपेस्ट इट आफ्टर द रिट्रेसमेंट, राइट? ये हमारा रिट्रेसमेंट लेवल है। अगर हमारा रिट्रेसमेंट लेवल पे आके देखोगे where exactly it took the rejection and the moment where it is exactly reversing from. So this is the level of allocations that you have to be looking at each and every point of eternity. Eternity liquidities are very much important to identify एक major change of role. Major change of role को identify करने में reversals, candles allocation सीखना बहुत जरूरी होगी, right? So agar if you can identify the eternal liquidity points for the reversal, you will be exaggeratedly well at executing the trades
where exactly the markets will take the rejection from. Now let's come down to 1 hour. Currently, market is in the Asian session. Asian session, what is it saying? Right? Let's mark out on the levels of 1 hour. ये मेरा daily candle है, correct? Okay, this is my daily candle. So इस कैंडल अलोकेशन में अगर नोटिस कर रहे हो, the market took the way up, but the liquidity was bigger, right? Looking towards the strong shadow, first side movement. This is not indecision candle, this is a shadow candle, right? Where the market structure will get changed accordingly. राइट, इस चेंज ऑफ अकोमोडेशन में अगर इस पॉइंट को अलोकेट करके चल रहे हो, जैसे कि हमारा ग्रुप में शॉर्टकट ट्रेड चल रही है, बट कीपिंग इन माइंड वेयर इज द ब्रेकर अलोकेशन ऑफ 1 hour. This is the breaker allocation of 1 hour. From this point, the trade has been executed, and keeping in mind that only 4 points is dropped. Okay, so यहाँ पे हमारा मेजर कॉन्सिक्यूटिव मूवमेंट किस तरफ की होगी, लिक्विडिटी रेंज ऑफ अलोकेशन किस तरफ की होगी, राइट? वेयर आर द मेजर लिक्विडिटी रेंजेस, कीपिंग इन माइंड दिस इज वन ऑफ आवर ब्रेकर पॉइंट रेंजेस, राइट? सो ये एक ब्रेकर पॉइंट है, बट हमें इस ब्रेकर पॉइंट रेंज को आइडेंटिफाई नहीं करनी है, राइट? अलोकेटिंग द मोमेंटल ट्रेड्स, what is the structure that you will be finding over here? One side जो मूवमेंट हुई थी, उस मूवमेंट के हिसाब से reallocational of the point, if you notice from the retracement, where is it exactly taking the rejection from, right? So that is how you have to identify the reversals. Reversals are the eternal liquidity points where the market will take an exaggerated turn, right? So you have to keep that in mind where exactly that eternal points of liquidities are allocated. Now coming down to 15 minutes, what do you see in 15 minutes range of allocation? 15 minutes range of allocation is being looked at the shadow range as the first TP1. If this TP1 breaks, allocates below this equal lows, the trade will be allocated directly at 28.73 for today. And each and every time, if you see a continuous move with a big strong candles either side, from the retracement point of view, right? Just for an example, अगर मैं इस point of action पे, right, इस candle के allocation को देखूं, दो candle के allocation, right? After the retracement, let me copy the same thing and allocate it post retracement level. What do you see, where from where did it created the next retracement, right? Copy, repaste it, again allocated from the re-retracement level. What do you see? The retracement moves is according to the first standard move. ये हमारा first standard move था, correct? First standard move, रेंज लिया, रिट्रेसमेंट क्रिएट की, वहां से ही फिर से सेकंड कैंडल अलोकेशन दिखाई, राइट? फिर से रेंज ऑफ सेकंड कैंडल अलोकेशन लिया, रिट्रेसमेंटल मूव को अलोकेट करते हुए, दिस इज द मोमेंट विच थर्ड अलोकेशन क्रिएटेड. बट ओवरऑल हमें नोटिस करके चलना होगा विच इज ऑफ 1 hour. जितना 1 hour का अलोकेशन पॉइंट होगा, जो कि ये आप देख रहे हो, दिस इज द 1 hour अलोकेशन, उतना ही लेके मार्केट इज स्टार्टेड टू क्रिएट द रिवर्सल जर्नी. सो अभी जो जो लोगों की मिस हुई है, राइट, सुबह से ट्रेड में नहीं है, वो लोग कहाँ पे ट्रेड्स को अलोकेट करके चलेंगे? The trade of allocation will be identified with the next rail journey. What is the next rail journey? The next rail journey is to be identified in the symmetrical same platformical range, right? First drop,
copy retracement range, from the retracement range, reallocate the trade. Target sounds to be at 2888, which we had already allocated, right? The major liquidity allocations, if we look at the range 1, this is the range 1 of liquidity, this is the range 2 of liquidity, major liquidities, right? किसी भी लिक्विडिटी को अलोकेट करके चलना हो, हमेशा एक चीज याद रखो, उस लिक्विडिटी को ग्रैब करने के लिए रिट्रेसमेंट का पहले कैंडल का ट्रेंड लाइन अलोकेशन ड्रॉ करके उधर से रिवर्सल पॉइंट ऑफ एक्शन को ड्रॉ करो, राइट? मार्केट फर्स्ट रिवर्सल पॉइंट कुड बी एट द रेंज ऑफ दिस, not prior to that. Okay. Coming down to 5 minutes. 5 minutes, it's a clear execution. Sorry, guys. 1 second. Yeah. So coming down in 5 minutes, entry executions अगर notice करना है, very simple. Don't exaggerate the entries. Allocate the range movement. What does the range movement looks like? The range movements looks like अगर double confirmation चाहिए, just simply draw the fib levels. You will identify the range of movement, right? This is one of the small liquidity range where you can see a small rejection then fall through, right? Because major range of allocation point हमारा क्या है? Shadow candle, which is this one. 5 minutes का, राइट? अगर 5 minutes का शैडो कैंडल अलोकेशंस के हिसाब से देखा जाए तो फर्स्ट रेंज ऑफ ड्रॉप हो चुकी है, सेकेंड रेंज ऑफ ड्रॉप, देन स्मॉल रिट्रेसमेंट, अगेन फॉलो थ्रू. Let me re-explain you the circumstances of drop 1. Copy the same thing, reallocate again, which is the drop 2, right? From this drop 2 point, you could see a small rejection again and followed through with this movement, you will allocate the next trade towards the bottom line, not prior to that. Any doubts, please do ask, guys. Next, let's come down to BTC. गोल्ड में कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो अभी. No doubts. Let's move down to BTC. What a trade, guys. BTC. Amazing. Just give me a moment. Guys, hit the like button if you're learning from the stream.
Like, share, and subscribe. Yes, same thing followed through the allocational point. And what the levels you can see over here, this is the code which we have created from our own team. So that is the levels which has been allocated from. Okay. So here, let's start with the daily candle. What do you notice in the daily transformational point? The market is in the range. What is that range called as? Consolidation, POI, major liquidities. If I mark out the major liquidity range, this is the range number one, this is the range number two, right? Two levels marked, coming down to 4 hours, looking for the reallocational point. Why the trade was taken towards the long? What do you notice at the range of liquidities in the consolidation range? Consolidation range के अंदर की liquidities identify करने के लिए first, what is the small major allocation that you have to look at? The small major allocation that you have to look at is where are the major liquidities allocated. First range, right? First range of allocation को break किया है नहीं किया है. Second range break किया है, yes, definitely break किया है. So whenever a car moves into a direction, right? So always what does it look for? Right? कोई भी गाड़ी डायरेक्टली 10,000 किलोमीटर चलाओ बोलेगे तो नहीं चलेगा ना. बीच बीच में फ्यूल टैंक्स, फ्यूल स्टेशंस की जरूरत पड़ेगी, गाड़ी को रिफिल चाहिए होगा, उस रिफिल अलोकेशंस के हिसाब से ट्रेड्स को अलोकेट करना होगा, राइट? तो अभी एट दिस पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ 4 hours, let's consider this as a first move, right? With the retracement allocation, this will be the second move, right? With the second move, there will be a refilling which will happen over here at this point. Again, it will start the rally. गाड़ी स्टार्ट होगी, मूवमेंट अलोकेशन के हिसाब से जाएगी, एंड इट विल टेक आउट टू द रेंज. सो यहाँ पे व्हाट इज द वन मेजर थिंग दैट यू हैव टू बी फॉलोइंग? Small major liquidity areas of 1 hour. Small major liquidities of 1 hour is at this point of action, right? A candle की high, उसके ऊपर A candle की high, which is equivalent to around 4,000 points, which is 40x, right? At this 40x range, क्या ये गाड़ी डायरेक्टली मूवमेंट ऊपर के लिए जाएगी? डेफिनेटली अगर इवनिंग सेशन में होता तो चले भी जाती, राइट? बिकॉज ट्रैक खाली रहती है, हाईवे होती है. The bigger, the faster the car, the faster the destination, correct? The same thing at the range. अभी का रेंज के हिसाब से लंदन सेशन आने वाला, मूव डायरेक्शनल हो या चेंज ऑफ डायरेक्शन, क्या चाहिए इसको? लिक्विडिटी, राइट? वेयर इज द नेक्स्ट लिक्विडिटी रेंज? 1 hour की मूवमेंट ये थी, ओवरऑल कॉपी पेस्ट. Where is the second movement of allocation? Exactly in this shadow range. इस शैडो रेंज से फिर से एक रिट्रेसमेंट. अगर कंटिन्यूटी में जाना है, यहाँ 0.3 और 0.5 से ही ऊपर चला जाएगा या चेंज ऑफ कैरेक्टर बनाएगा, तो यहाँ से एक रिजेक्शन लेगी, रिजेक्शन लेके मिनिमल चेंज ऑफ कैरेक्टर एंड बिग चेंज ऑफ कैरेक्टर क्रिएट करके वहां से डायरेक्ट फॉल टिल 94,500 तक दिखने को मिलेगी. So this is BTC 1 hour because यहाँ पे everything is currently at the POI range from last 4 months. So the major allocation you have to be looking at is very symmetrical at the right point,
right? Till the time it doesn't sustain above 102, आप डायरेक्शनल होल्डिंग पे जाओ ही मत स्विंग में. ओके, always notice that allocation point. With that allocation point only, now coming down to 15 minutes, कहाँ कहाँ पे मेजर लिक्विडिटी allocations आपको दिखने को मिली है? All the major liquidity allocations is being considered at the point of view where the major liquidities are aligned. कहाँ पे major liquidities align हुई थी? First breaker point allocation था ये, right? Which is according to this candle. Movement came, took the reversal, right? So at the same point market ऊपर गई है. At this point of allocation भी अगर notice करोगे, let me draw an allocation which is here one. Copy the allocation, withdraw it. This is my second allocation. Where is it exactly? The smaller range liquidity बोलते हैं ना उसे, right? तो यहाँ तक जाके एक छोटा सा retracement लेके फिर से the run will continue towards the long. Okay, so this is in the smaller range. So 5 minutes में just execution देखना, उससे बड़ा कुछ भी मत देखना. Wait for the liquidity allocations. जो जो यहाँ से मिस किए, you will find an eternity liquidity over here with the consecutive drop price. The consecutive drop price मतलब एक प्राइस एक्शन जो ड्रॉप होती है, राइट, एक रीजन की वजह से होती है. दैट रीजन ऑफ अलोकेशन इज ऑलवेज विद द वॉल्यूम, राइट. लास्ट कैंडल अगर वॉल्यूम की नोटिस कर रहे हो, मार्केट इज इन द ट्रेंड, वॉल्यूम हैज बीन हाईली फ्लक्चुएटेड. हाईली फ्लक्चुएटेड मतलब मैनिपुलेशन नहीं बोला जाता है, मतलब यहाँ पे बायर्स इंटरेस्टेड है एट दिस रेंज. जो भी शॉर्ट ट्रेड्स लेते, इंट्राडे ट्रेड्स लेते, वो लोग इस कैंडल पे इंटरेस्टेड थे बिकॉज वो एशियन सेशन की अलोकेशन के हिसाब से यहाँ पे ब्रेक देखने को वेट कर रहे हैं एट दिस रेंज. अगर ये ब्रेक दिखेगा तो दे विल एड ऑन टू द सस्टेनेबिलिटी टिल दिस लेवल व्हिच इज 99,796, not prior to that. Any doubts, guys? Please do ask. कोई भी डाउट हो पूछो. डोंट हेजिटेट इन एनीथिंग, ठीक है. Do ask the doubts. With the doubts, you will get the right clarity of allocations, not prior to that, guys. अगर किसी को सोलाना में ट्रेड करना है, यहाँ से आपको एक रिजेक्शन दिखने को मिलेगी अभी. उस रिजेक्शन के साथ एड ऑन नंबर वन, एड ऑन नंबर टू. ओके,
ब्रेक चाहिए, ब्रेक से पहले नहीं। डू आस्क एनी डाउट्स यू हैव, बिकॉज डाउट्स पूछने से ही क्लैरिटी मिलेगी, क्लैरिटी मिलने से ही यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई इट इन अ लॉन्ग रन। अभी भी बोल रहा हूँ, आस्क डाउट्स। Consecutive allocations is very much important. Wait for that allocational point, then we'll look for it. Not prior to that. Beautiful trade. बैंक निफ्टी नेक टू नेक में ट्रेलिंग करके रखो। नेक टू नेक मतलब एंट्री पॉइंट हमारा यहाँ पे थी, which is at this level, entered, right? Now drag down this level down at the point of range. Point of range मतलब इसके ऊपर रख लेना, because the construction is already built with 200 points with running. So what is the one major thing that you have to keep in mind and follow is where is the next structural change, right? अगर notice करोगे, drop number one, copy the drop number one, reallocate the drop number one, उस हिसाब से where is the next reversal from? Next reversal is from, मतलब retracement is from 49,451. ठीक है? Allocate accordingly to that, then allocate the circumstantial add-on. The circumstantial add-on is where you don't get feared of adding into the next round of allocation. ठीक है? Is Nifty creating a pattern to break the structure of higher highs from here? Not yet. Because the target is at 23,194. I'm not biased, but this is the target which it will take first. Then only the movement will circumambulate towards the long, not prior to that. Beautiful. 40 more points. Post that, you will be having a movement which will be called as a retracement and then the drop again. Good going, guys.
हर एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में डोंट लुक फॉर a trade which is a reversal one. Wait, go with the trend, follow with the trend, be with the trend. Trade what you see, not what you think. हमेशा. Okay. Ask for the doubts, get the clarity, allocate it accordingly. किसी को भी कोई भी डाउट है, पूछो. Sir, at every retracement, can I look for a short in gold or a long in BTC? Depends on what kind of retracement that is. रिवर्सल रिट्रेसमेंट दिखता है तो गोल्ड में we'll be looking for the long, right? Currently वो दिखने को नहीं मिली है, right? Because what do you notice in 15 minutes? 15 minutes में this was the first change of character, right? फर्स्ट चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे हुआ. इसके बाद एक ड्रॉप डाउन दिखने को मिली which took a major change of character, right? Major change of character build out होने के बाद यहाँ पे क्या नोटिस करने को मिल रहा है? यहाँ पे एक शैडो क्रिएट. ये शैडो फुलफिल होने तक हम लॉन्ग की तरफ देखेंगे नहीं. बिकॉज क्योंकि wherever the liquidity swings are allocated, the liquidity swings are known to be grabbed, राइट. जब तक इस कैंडल के नीचे क्लोज होती है तब तक हम शॉर्ट की तरफ ही है. इस रेंज ऑफ एक्शन में हल्का सा भी बॉक्स क्रिएट हो जाएगा ना, देन यहां से आपको रिवर्सल देखने को मिलेगी, उससे पहले नहीं, राइट. So always keep in mind that the notification of allocation is right at the point where the trends is meant to be, not prior to that.
ट्रांजैक्शनल अलोकेशंस को आइडेंटिफाई करने के लिए ट्रांजैक्शनल मूवमेंट्स को रेक्टिफाई करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है। Consecutive allocations are the movement of consecutive drop fall. Yes, right. हमेशा एक चीज याद रखो, अंडरस्टैंड, हमेशा एक चीज याद रखना, अंडरस्टैंड द मेजर psychology of the retailers. Why? Wherever you see a movement, just for an example, अगर मैं स्ट्रक्चर डालता हूँ, राइट, कहाँ कहाँ पे प्राइस एक्शन बिल्ड हुआ है, ओके, इसके ऊपर लोग बैठे, ओके, फिर से इसके ऊपर लोग बैठे हैं, फिर से एक रिट्रेसमेंट, रिट्रेसमेंट का हाई, अभी यहाँ पे लोग बैठे, करेक्ट। सो इस चीज को आप ब्रेक कैसे करोगे? इस चीज को ब्रेक करने के लिए हमेशा एक चीज याद रखना, आइडेंटिफाई द मेजर कंसोलिडेटेड स्टॉप आउट्स। मेजर कंसोलिडेटेड स्टॉप आउट्स, व्हाट आर दैट मीन्स, राइट? मतलब इस पॉइंट ऑफ एक्शन पे जो जो यहाँ पे एंटर हुए, राइट, उनका डायरेक्ट टारगेट कंफर्मेशन उनको क्या है, ये है, करेक्ट। एग्जाम्पल ड्रॉ आउट कर लो। सो एग्जाम्पल ड्रॉ आउट में ये टारगेट है, मार्केट उतना ऊपर गया ही नहीं, राइट, विद द ब्रेकर पॉइंट रेंज ऑफ दिस रेंज मार्केट टुक ए रिजेक्शन। जो जो यहाँ पे एंट्री हुए थे उनका एसएल्स कहाँ पे था, उनका एसएल्स इस रेड कैंडल के नीचे थी, राइट। उस रेड कैंडल के नीचे फिर से इस ब्रेक होने के बाद फिर से यहाँ पे ऐड किए, राइट, फिर से एसएल यहाँ पे थी। कीपिंग इन माइंड, यस, दे मेड ए स्मॉल स्मॉल प्रॉफिट्स, राइट, नो डाउट। जिन जिन को छोटा छोटा प्रॉफिट, स्कैल्पिंग्स, जो जो जल्दी निकलना चाहते हैं वो लोग सब क्या किए, ओके, यहाँ पे एक पीओआई बिल्ड हुआ, ओके, इस पीओआई में निकल जाता है। बट मेजर चेंज कहाँ पे दिखने को मिलती है, जो जो यहाँ पे बैठे थे उनका एसएल लेने के बाद, राइट, दैट इज द मेजर रिवर्सल पॉइंट दैट यू हैव टू बी लुकिंग एट हमेशा, राइट। सेम चीज में उस रिटेल एग्जैचुरेटेड मूवमेंट ऑफ द स्टॉप लॉस हंटिंग में अगर जाए, तो व्हाट इज द वन मेजर थिंग दैट वी विल बी फॉलोइंग, the one major thing that I'll be following is what is the ratio of that trend,
The ratio of my trend is over here. I'll same copy it, repaste it, and look for a second allocation point, right? Second allocation point के हिसाब से it had to be at this range, जो कि जो रेंज ऑफ अलोकेशन है, इस रेंज ऑफ अलोकेशन में दिखने को मिलना चाहिए था, राइट? इस रेंज ऑफ अलोकेशन में क्या मार्केट आई? यस, रेंज ऑफ अलोकेशन पॉइंट में तो एग्जैक्टली मार्केट आई। क्या ब्रेक कर पाया? नहीं कर पाया, राइट? क्योंकि यहां पे फिर से लोग कहां पे बैठे थे? नीचे के लिए रिट्रेसमेंट पॉइंट नंबर 1 2 ऊपर गया है। इस पॉइंट ऑफ एक्शन में एक मेजर चीज आइडेंटिफाई करते हैं हर एक रिटेलर्स, उनको प्राइस एक्शन ही गलत सिखाया गया है, राइट? अगर नोटिस करोगे, नीचे आया, रिट्रेसमेंट लिया, नीचे आया, ओके, यहाँ पे क्या करेंगे? ब्रेक नहीं हुआ है, मतलब और एक रिट्रेसमेंट आएगा। एक रिट्रेसमेंट आने के बाद सब लोग इस पॉइंट ऑफ एक्शन पे एक लाइन ड्रॉ करके रखेंगे यहाँ पे, इस रेंज ऑफ अलोकेशन पे। अब जब इस रेंज ऑफ अलोकेशन में जब सब लोगों ने लाइन ड्रॉ किया है, व्हाट इज द वन मेजर थिंग दे विल डू? सब लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे, यहाँ पे एंट्री करेंगे, ओके चलो ये एक पुल बैक है, इस पुल बैक में यहाँ पे एंट्री करेंगे। बट allocatively look at the consecutive range क्या है? consecutive range तो easily बता रहा है this is a range where it will take the rejection from, because the first trend change, right? first trend change मतलब जो कि न्यूयॉर्क पीएम सेशन में मार्केट एक कंसोलिडेटिव पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जोन क्रिएट किया था यहाँ पे, राइट? क्रिएट करके आज का दिन में फर्स्ट ब्रेक लिया, यहाँ पे बैठे लोग रिट्रेसमेंट पे, यहाँ पे बैठे लोग फिर से वेट करते हुए इस रिट्रेसमेंट की ब्रेक का चक्कर में एवरीवन्स एसएल वाज हियर, एसएल हंट हुआ यहाँ पे, लिक्विडिटी वाज ग्रैब्ड। व्हेन द लिक्विडिटी वाज ग्रैब्ड, व्हाट डू यू नोटिस? The market came down, took a retracement. Now, what is the retailer's mindset at this point? Okay, this is a retracement point. Let me follow the price action. Price action follow करके यहाँ पे हर एक लोग क्या ड्रॉ किए? एक फिब लेवल ड्रॉ किए। एक फिब लेवल जब ड्रॉ करते हैं, so what is the first major thing that they will be following? What is the first major thing they will be following? They will draw a fib level, राइट? ओके, 0.5 से रिजेक्शन ले रहा है, ओके, यहाँ पे मेरे को एक हल्का सा पुल बैक मिलेगा, देन आई विल सिट फॉर अ शॉर्ट, राइट? लुकिंग एट दिस पॉइंट ऑफ एक्शन, अभी यहाँ पे उनको कंफर्मेशन मिल गया, ब्रेक हो गया है करके, राइट? ब्रेक होके फ्यू रिटेलर्स विल सिट इन दिस रेड कैंडल, फ्यू विल वेट फॉर द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ एक्शन, इस पॉइंट ऑफ एक्शन से भी बैठे होंगे, एंड फ्यू मेजर मेजर ऑफ द मेजर रिटेलर्स विल लुक फॉर द ब्रेक, इस ब्रेक पे बैठने की सोचेंगे। जैसे उस ब्रेक आता है, सब लोगों की एंट्री यहाँ पे होती है, उसी एंट्री के साथ थोड़े लोगों का एसएल यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, एंड व्हाट डिड यू नोटिस? ऑल द एसएल्स वर ग्रैब। सो हमेशा वेट फॉर द राइट अलोकेशन पॉइंट, एंड उस अलोकेशन पॉइंट के हिसाब से ही ट्रेड्स एग्जीक्यूट करोगे, देन यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द राइट ethical liquidity points to enter into the trade. Whenever there is a movement, wait for that movement, allocate the trade, and have a proper risk management, right? अगर आप लोग ट्रेड कर रहे हो विद अ लेवरेज, of 1:5 या 1:4 या 1:3, always follow the rule of MTSL. What is MTSL? Mind trailing stop loss, right? Why it should be on a mind trailing stop loss? अगर आप सिस्टम पे यहाँ पे एंट्री किए हो, राइट, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, ये हमारा लॉन्ग का ट्रेड एग्जीक्यूशन पॉइंट था, राइट? इस पॉइंट ऑफ एक्शन पे अगर हम एसएल इस स्लो पे लगाते, ऑलवेज इट विल हंट यू डाउन. So you have to understand what is the exact range of
ट्रेलिंग, राइट? अभी भी MTSL चल रहा है. वेयर इज द MTSL रनिंग? MTSL इज रनिंग एट 4 पॉइंट्स, राइट? सिस्टम पे CTC है, because the range of traveling point is not that big as of now, right? क्योंकि लंदन सेशन स्टार्ट होने वाली है. The range point of liquidity is what the new retailers who will be trying to enter at this break, यहाँ पे जो बेटे हैं, राइट, इस ब्रेक के ऊपर जो बेटेंगे उनका लिक्विडिटी यहाँ पे होगा. दैट इज वेयर आर मेजर MTSL is, राइट? जब तक आप माइंड ट्रेलिंग कर रहे हो, आपको पता है आपका रिस्क मैनेजमेंट कितना है, उस हिसाब से अगर आप ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करोगे, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द राइट allocation movement फॉर a right trade off indications. So always follow the rule of and eternal liquidity points with the range allocation, with a proper following risk management system to allocate the trades. Don't give your stop losses as where all the retailers do keep it. Okay, keep that in mind and follow the rules. Any doubts? Do drop it in the comment section. We'll help you out to solve your queries and make you a great analytical trader for the trades which you will be taking in future. Thank you. किसी को भी कोई भी डाउट है पूछो. If you have done a mistake, learn from the mistake. Don't repeat the same mistake. Right? That's the one guru mantra of the trading. Do mistakes, no doubt, but don't repeat the same mistake. Maintain the general, follow the rules, allocate the trades, looking for the right movement allocation. With the right movement allocation, follow the systematical plan that you have built. What is the systematical plan that you will be looking for? One trade, one strategy, one route, right? यहाँ पे लोग क्या करते हैं, दे डोंट फॉलो दैट. ओके, इसमें ट्रेड लिया, इसमें ट्रेड लिया, इसमें ट्रेड लिया, इसमें ट्रेड लिया. वैसे थोड़ी होगा जनाब. One trade of identical move with one strategy is what you need. एक स्ट्रैटेजी को फॉलो करो, एक सिस्टमैटिक प्लान को फॉलो करो, दो चार्ट्स के ऊपर ऑब्जर्व मत करो, राइट? अगर जस्ट फॉर एन एग्जांपल, इफ यू आर ट्रेडिंग इन forex और इफ यू आर ट्रेडिंग इन क्रिप्टो और इफ यू आर ट्रेडिंग इन इंडियन सेशंस, always remember, अगर you are trading crypto, your aim should be BTC and Ethereum. If you're following Forex, your aim should be BTC Gold. If your trading plan of system in Indian sessions is Nifty, then your second option should be Banknifty or Nifty. Either one, right? दो charts के ऊपर focus ही मत करो, बोल रहा हूँ ना. Two charts is the charts which will make you a critical gainer of moment, right? Critical gainer of moment क्या होता है?
मतलब ओके, एक चार्ट पे फोकस कर रहे हो, एक ही चार्ट पे फोकस रखो, उससे ज्यादा जाओ ही मत। ओके, फर्स्ट मास्टर वन चार्ट, देन मास्टर द सेकेंड, राइट? दो चार्ट मास्टर करने के बाद दूसरा चार्ट, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड and the price action, because you have given the entire time on the understanding of charts of only two patterns, right? अगर बीटीसी फॉलो कर रहे हो, गोल्ड फॉलो कर रहे हो, राइट, वो छोड़ के किसी और चार्ट देखो ही मत। That should be your way of looking into the perspective range of gaining knowledge, right? So सेम चार्ट देख रहे हो, सेम चार्ट देख रहे हो, सेम चार्ट देख रहे हो, क्या होगा? You will identify a big movement, राइट? डेफिनेटली। यहाँ पे अगर आप नोटिस कर रहे हो, व्हाट इज द रेंज? इस रेंज के ऊपर लोग एंट्री किए, राइट? कीपिंग इन माइंड, वी नो दिस इज वन ऑफ द मेजर रिजेक्शनल पॉइंट्स। सो दिस इज हाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई। एक चार्ट, दो चार्ट, उसके ऊपर जाओ ही मत जब तक यू आइडेंटिफाई द प्रॉपर रेंज ऑफ लिक्विडिटीज। Simple liquidity allocations is the thing that you have to follow, या बीटीसी हो या गोल्ड हो। डेफिनेटली बीटीसी में मूवमेंट वन शॉट आते हैं, बट अगर आप नोटिस कर रहे हो, वेयर आर द अलाइनमेंट्स नोटिस कर रहे हो, will it be difficult for you? No, it shouldn't be difficult for you. It will be the easiest part for you to understand and gain the knowledge where you will be needing it, right? That is the main consecutive thing that you have to follow on, right? अगर options में trade कर रहे हो, keep in mind that out of the money में both rare बनता है, be in the money or at the money, right? Range of allocations, point of interest में trade मत करो, market consolidation है तो trade मत करो, right? गोल्ड में सेम सिनेरियो, अगर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में है, जिस तरफ का ब्रेक उसको ऑपोजिट डायरेक्शन का ट्रेड। डायरेक्शनल मूवमेंट है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बिल्ड हुआ है, अगर डायरेक्शनल मूवमेंट में ही जाना है तो फर्स्ट शॉर्ट की तरफ डाउनफॉल दिखाएगी, देन इमीडिएटली इट विल स्काई रॉकेट विद द डायरेक्शन, the same in the opposite direction as well. So you have to be very careful on allocating that kind of trades. Okay, guys, any doubts, please do ask. Because जब तक आप लोग डाउट्स क्लैरिफाई नहीं करोगे, you won't be able to suffice. The only thing I request, following the rule is that difficult? See, क्या हुआ था? एग्जैक्ट मूवमेंट, एग्जैक्ट अलोकेशन, राइट, रिट्रेसमेंट, फॉल, जो जो यहाँ पे लिक्विडिटीज इस लेवल के ऊपर बैठे थे, उनका लिक्विडिटीज गिरा। So just it's two things that you have to follow over here: patience, discipline, and look over trades. Nothing more. Beautiful guys. इसको ब्रेक करना है अभी। If it breaks, it will continue the trade for another 7x from here. मतलब डायरेक्शनल मूवमेंट होने वाली है अलोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। On the week high break. Yes, that's right.
एक शॉट में निकालो ना सर। भाई ट्रेड चल रहे दो। कंफ्यूज हो रहे हो, आस्क। राइट, अगर ट्रेड ऑफ अलोकेशन मिस हो रहा है, आस्क। बिकॉज मूवमेंट एक शॉट में मिलता है, दिन में एक ही मूवमेंट थोड़ी मिलता है। वी हैव 4 सेशंस, 4 सेशंस। इन 4 सेशंस, any session directional movement is definite. The only thing we have to be focused here is not going against the trade. When you go against the trade is where you will lose out your money. Not prior to that. Always remember that. Till the time you are in your game, till the time you are in your zone, just two things that you have to keep in mind and follow. What are they? Following the rules, not breaking the rules, following the discipline, staying patience fully in the trades or watching the markets. आपका लेवल आएगा, उस लेवल पे आप एग्जीक्यूट कर लेना, सिंपल। एक सेकंड के लिए लेवल हटा रहा हूँ। But this has a very long way to go, 1 आवर के हिसाब से बीटीसी। जस्ट द थिंग, राइट, एक लिक्विडिटी फिर से लेगी कहाँ पे? इस ब्रेक पे जो जो यहाँ पे एंट्री लेंगे उनको निकालेगा फिर से आके, बाद में जाके लेवल ऑफ टारगेट को लेगा, बिकॉज देयर इज अ शैडो रेंज। अगर रिवर्सल होना है तो इस रेंज ऑफ एंगल पे ही आके रिवर्सल होगा, उससे पहले नहीं होगी। सॉरी गाइस, या प्लीज डू आस्क, किसी को भी कोई भी डाउट है।
Congratulations on your book launch. Thank you. फिर से मार्च एंड से the price actional point will be changing, right? How? Because every 3 months there is a change in the action of price, right? The same price action, same allocations, सब same दिखेगी, but variations differ होंगे. उस differ variation को identify करना होगा. So you will be able to allocate it accordingly. Concept range को identify करो. Everything will be easier for you guys. How will you identify that? With the identification of right liquidity range. Consecutive allocation points identification is very important.
ब्रेक चाहिए उस ब्रेक के साथ ही।
Lovely. Hey, beautiful, yeah, beautiful. You got to know how the liquidities have been taken. Simple. Wait for the right price action. क्या हुआ? यहाँ पे जितने भी शॉर्ट किए थे, यहाँ पे जितने भी लॉन्ग किए थे, सबका लिक्विडिटी लिया. Run. If the target of 15 minutes breaks here, the next target is directly of 1 hour. Keep it going. Beautiful. That is how the market follows. What do you see? This was our target retracement from the retracement point, 15 minutes target. This is the first range. Once it breaks, then we will look for the next target, which is of 1 hour. राइट, इसको ब्रेक करना है पहला. ब्रेक करके एक छोटा सा विक क्रिएशन एंड कंटिन्यूटी, then we will be having this 1 hour target. Right, this is the moment of 1 hour retracement point. From this retracement point till the shadow range, the overall view. Good job, guys, keep it up. Patience and discipline, ये दो चीज आ गए है ना, you will be mastering each and every trade that you will be taking. Allocation point is very much needed. राइट मूवमेंट पॉइंट, राइट अलोकेशन, दो चीज के ऊपर कुछ और नहीं. ठीक है.
Excuse me. Yeah, excused.